Guys, just a quick check. If you can see me live, if you're able to hear my voice, please put a thumbs up. It's been a very long time since I came online and took a session. But please put some thumbs up in this comment section. If you're able to see this, I think there is a lag, but please let me know if my voice is clear. Hello, Hardik. Welcome, Shatish. So please put a thumbs up if my voice is audible to you, if you're able to see this mark on the screen. Since I'm taking a session after a very long time, it took some time to debug all the issues, but I hope your preparation is going really well for tomorrow. I know आप सबने सब पढ़ाई कर चुकी है. Please put a thumbs up if you're able to see this. We'll quickly begin with the session. Hello, Silent Bro, that's a very nice name. Mayank Arora is saying finally, yes, finally from my side as well, audible and visible. So the audio quality is good. Are you able to hear this? Sorry for the green screen. Next session onwards, I'll be having a better background. Welcome, Tanisha. Hello, Nehal. All right, so let's begin with the session. But before we start, please let me know in the chat how many of you have actually AI 417 tomorrow, and how much have you prepared. In preparation, you can write 80%, 90%, 100%. So accordingly, we'll continue with the session. Green skills वगैरह भी करवाओगे. I don't think you actually need preparation for green skills, because green skills is the easiest topic for AI 417 as well as IT 402. Entrepreneurial skills also we have covered in a lot of sessions. In this session, we will see what are the important topics that you had to cover in AI 417. And by the end of the session, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से most important topics. So if you know, you have two parts in your exam. This is for NLP and this is for evaluation. Right? Sir, only revision done. Shashi is saying 85% complete. Okay. It's all right. By the end of the session, आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या prepare करना चाहिए था और आप क्या prepare कर सकते हो. So let's begin quickly by looking at the syllabus. Okay, so looking at your CBSE syllabus, they have given a lot of topics जो आपके exam में आ सकते हैं. But I will tell you what are the 3 or 4 most important topics which you can expect कि probably around 18 marks के questions आपके उसमें से ही आएंगे. So introduction to NLP, you have already covered. You do not need to study that again. NLP applications, there are about 4 or 5 in number. Basically आपको chatbots इसमें important आता है. Right, chatbots है एक, और वेरियस अदर थिंग्स. आपका गूगल मिनी कैसे काम करता है, आपका अमेजॉन इको डॉट कैसे काम करता है, आपका जो टेक्स्ट समराइजेशन है, एंड आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट सेगमेंटेशन है वो कैसे काम होता है. वेलकम सृजन, आवाज गूंज रही है. सॉरी अनुभव फॉर द क्वालिटी इन ऑडियो. नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज टिप टॉप, बट फॉर नाउ आई थिंक यू हैव टू मेक डू. ओके, सो NLP applications में the most important thing which you have to remember is chatbots. And this is not actually important. As I said, chatbots में आपको क्या 2 चीजें याद रखनी है. 2 टाइप्स ऑफ chatbots होते हैं, उसमें आपको डिफरेंस याद रखना है. हेलो रिद्धि, वेलकम रोनित, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. Okay, so also human language versus computer language. Can anyone quickly in 1 or 2 words tell me what is the basic difference between human language and computer language? Emotional movement. Hello, be a learner. I hope you have all seen the previous videos. I hope you have revised everything. This session is just to increase the number of marks which you can get. All right. So, can anyone tell me, sir, एक बार flow chart के form NLP. Okay. Dear learner, we will cover all those things. ठीक है. Bag of words is very important. And TF-IDF. How many of you are facing difficulties in TF-IDF? I think probably 95% of you are facing difficulty in this. By the end of the session, we will see how you can go about the TF-IDF index, scoring 22 on 25. So okay, I think most of you should aim for 24 or 25 out of 25 because it's a very easy exam which is gonna come tomorrow. Okay, so let's look at the next thing, which is evaluation. Now, evaluation has only 1 or 2 things. The most important part is the formulas. You have to remember all the formulas. Okay, and you have to also know what a confusion matrix is. So these are the only 2 things which you should remember.
एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल एंड एडवांस कोड, इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर देन वेल एंड गुड, इफ नॉट आई विल बी टेलिंग यू a trick to quickly solve these questions, and I'm 100% sure that you will be getting about 3 marks questions from this at least. Okay, sir, exam easy hogi kya? Vansh is asking. I think you had a lot of time to prepare for AI 417, so I think for you it should be easy. And if you find that it's going to be difficult, I will tell you a few questions that you should prepare for. Okay, so let's quickly jump on to the important topics for tomorrow's exam. Now, this is basically subjective. NLP में आपके क्या क्या applications होते हैं? Numerical questions की practice करवाओ please. Yes, Arman, in probably the next 15 or 20 minutes, we will move on to the numerical questions. Camera की तरफ भी देखो. Okay. So it gets kind of difficult to look into the screen as well as the camera at the same time. Okay, so what sentiment analysis is? How many of you use Twitter? So by Twitter, I think today Elon Musk bought Twitter. Most of you might know by now. But Twitter में जब आप tweets देखते हो, some tweets are positive, some tweets are negative, and some tweets are neutral. Right? इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं what are the emotions behind it. Some people are happy, some people are sad, some people are neutral. So sentiment analysis का मतलब क्या होता है? ये जो सब tweets हैं, आपको इन ट्वीट्स के बारे में पता करना है, इज इट अ पॉजिटिव ट्वीट, इज इट अ नेगेटिव ट्वीट, और इज इट अ न्यूट्रल ट्वीट, राइट? सो इस चीज को हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं. इट इज डन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है? So any doubts you can ask me in the chat. I hope no one is spamming them, not by anonymous. Yes. Okay. So next application is text classification. Now you might get a question which is asking me, please tell us the various applications of NLP. So you can definitely answer a few of those. One of them is text classification. Now let's say आपकी board exam चल रहा है and you have all these PDFs with you. Now PDF हो सकता है साइंस की PDF है, आपके मैथमेटिक्स की PDF है, IT की PDF है. How would you classify all these PDFs? So by using NLP, you can classify them into technology, maybe not sports, or maybe science or fashion. So this is one of the applications of NLP. Okay, so this was one of the easier parts जो काफी आप easily solve कर सकते हो. The next important thing is chatbots. Now there are two types of chatbots. One is a normal rule-based chatbot, जो आपको सिर्फ हाय हेलो का रिप्लाई करता है, जो आप क्वेश्चन पूछोगे डायरेक्टली आपको आंसर करेगा. And one is a more intelligent type of chatbot which can actually hold a conversation with you. ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इसका आंसर कि आप क्या लिख सकते हो at the end of the session. Okay, so Tanmay has written an answer. Yes, Tanmay gave a very good answer for explaining the difference between human language and computer language. Script and smart bots. Yes, Janvi, you're exactly right. So how many of you have prepared the answer for the difference between the two? I know there is no thumbs up option here, but you can definitely like the video, or you can just put a thumbs up in the chat. AI based chatbot. Okay. So let's see the next one. Okay, so these are the various steps which you have to take. So आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको पूछा जाएगा what are the various steps which you can take so that the AI machine is able to understand the language, right? Can anyone tell me how many steps there are? I think there are 4 or 5 steps. Okay, so when we speak to our Amazon Echo or when we speak to our Google Mini, first thing first, जो बेसिकली आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है, बट आप वो सब वर्ड्स को डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. उसके पहले देयर आर अ कपल ऑफ स्टेप्स व्हिच वी विल लुक एट. Already liked the video from 3 accounts. I'm glad that you did that. Okay, so the first step is text normalization. We will look at what text normalization is. Okay, so सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है. Is everyone able to see this?
राइट। सो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, व्हाट वी डू इज हम लोग उसको सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लाइक अ नॉवल, राइट, अ नॉवल माइट हैव probably 10 raised to 5 sentences. So what you do is you convert that entire document into parts. So the first part is dividing into sentences. Now this is an easier part. इसके बाद now you know you convert this into tokens. अब tokens क्या होता है? जो आपने sentence में division किया, sentence can be divided into more smaller parts. For example, if you have a molecule, right? If I say CH4, now CH4 can be divided into C and H, right? अब आप इसको भी और divide कर सकते हो, that will be one proton and one electron. Okay? So इस चीज को हम लोग बोलते हैं टोकनाइजेशन। जब आप एक सेंटेंस को और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इसको हम लोग, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं tokens. I hope you have revised all this. This is the really easy part. Good evening, Arush. ठीक है, after this, what we do is we remove stop words. Now, someone had asked me a question कि stop words क्या क्या होते हैं? Is this a stop word? Is this a stop word? Is this a stop word? Can anyone answer? Are these stop words? Right? After converting into tokens, हम लोग चेक करते हैं कि जो टोकन मिला है उसका कुछ एक्चुअल मीनिंग है या नहीं, या अगर वो एकदम रैंडम सा नंबर है जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करें या फिर ना करें, दे आर एक्चुअली द सेम। सो लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। इफ आई से आई एम Akash. Alright, so this is a very meaningful sentence. A human is able to understand it completely. But if you see, कोई एक word आपको extra लग रहा है, for example, if I just remove this, I just say I Akash. Now grammatically it is wrong. In the English language it is kind of wrong. Rules follow नहीं हो रहे grammar के, but it is conveying a meaning which means that I am Akash, right? So these stop words which do not have any actual meaning, like a, and, are, as, or even the, these all words do not have any meaning, तो हम लोग निकाल देते हैं by removing stop words. Okay. So now after that, the next step is converting it to a common case. Common case मतलब हो सकता है आपने full capital आपके पास words हो, सिर्फ एक या दो capital हो, या फिर probably there is a combination of capital and small letters. What you do is, in order for the computer to understand, either आप सबको small case में कर दो या फिर आप सबको upper case में कर दो. So these are really simple steps before we proceed converting the audio or the language into a format which computer can understand. सर टोकन काउंट्स करते टाइम पंक्चुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप भी काउंट करते हैं? सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू सॉ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं टोकनाइजेशन, राइट? इट डज नॉट मैटर अगर आपके पास फुल स्टॉप है, अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास है, अगर आपके पास प्लस साइन है, नेगेटिव साइन है, all these are converted into tokens. Now in the next step, what you do is you remove all these stop words, right? So I hope I was clear enough, but please do not get confused. We will look at a few questions on how you can understand this in a better manner. All right. So now this is actually very important: stemming and lemmatization. Now, how many of you remember this? This question, the answer to this question has to be remembered completely. ठीक है, stemming का मतलब क्या होता है? Basically, for example, if I have a plant, right? Now this is the, I know you might have seen this before. If I have a plant like this, stemming का मतलब होता है जो भी पार्ट एक्स्ट्रा उग रहा है आप उसको काट दे रहे हो. So let's say, what are the extra parts? अगर मैं heel देखूं, what is the extra part? So if I say that heel is the main word, what is the extra part? Extra part is the ed. So using stemming, we remove this ed. तो आपका बन जाता है heel. Similarly for healing, the ing is the extra part. For healer, er is the extra part. Studies, es is the extra part. So while removing the extra parts, we call it stemming. Now one of the most important part about this is words can or can't
हैव अ मीनिंग। तो जो भी आपको एंड वर्ड मिल रहा है प्रॉब्लम यहाँ पर, तो आपको मीनिंग लग रहा है, बट ओवर इफ यू सी आपने एक्स्ट्रा पार्ट जैसे ही रिमूव किया, इस चीज का जो मीनिंग है वो बन नहीं रहा है। सो दैट इज द फीचर ऑफ स्टेमिंग। जरूरी नहीं है कि आपने किसी भी वर्ड का स्टेमिंग किया तो उसका एक मीनिंग बने। This problem is actually solved by lemmatization. Now, lemmatization or stemming में basic difference. Okay. So this is actually fast and this is comparatively slower, क्योंकि स्टेमिंग में वर्ड का एंड में मीनिंग नहीं बनता है तो ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ता है। बट इन लेमेटाइजेशन अगर आप देखोगे, यहाँ पर सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो इन सबका एक ही मतलब निकलता है, विच इज ही। यहाँ पर जैसे ही आपने देखा स्टडीज, इन स्टेमिंग आपका जो ईएस है वो निकल गया था तो सिर्फ स्टडी विद एन आई बचा। बट इन लेमेटाइजेशन अ मीनिंगफुल वर्ड इज क्रिएटेड लाइक दिस। सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग स्टडी, यहाँ पर आईएनजी हटेगा and it will become study. So all these words have meanings. Okay, so let me just have a look at the chat. Sir, only suffixes will be removed or prefix can also be treated as an extra. So generally Riddhi, this is known as the main word. जितने भी affixes होते हैं वो स्टार्टिंग में ही आते हैं। प्रॉब्लली हो सकता है कभी स्टार्टिंग में वर्ड, बट in the scope of our syllabus you will not see a word which is prefixed. ठीक है। Peer learner is asking punctuation को भी यूनिक टोकन की तरह काउंट करेंगे टोटल टोकन्स का नंबर निकालते टाइम। तो peer learner, yes and no. For your AI 417 exams you have to see कि आपके जो स्टेप्स है कौन कौन से। सबसे पहले आता है आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फिर आपका आता है सेंटेंस सेगमेंटेशन, फिर आप उस सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। व्हेन यू आर डिवाइडिंग दैट इनटू पार्ट्स, एक जो पंक्चुएशन मार्क आएगा दैट इज आल्सो अ टोकन। अंडरस्टूड? दिस इज आल्सो नोन एज अ टोकन। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग चेक करते हैं कि कौन से टोकन्स वैलिड है और कौन से टोकन्स वैलिड नहीं है। Sir, if the corpus is small, do we need to remove stop words? Shashi, that is a very good question. अगर आपके पास जो कॉर्पस है वो बहुत छोटा है, यू डू नॉट हैव टू रिमूव द स्टॉप वर्ड्स। डू वी नीड टू कंसीडर सिंबल्स इन टीएफ आईडीएफ? आई डोंट थिंक सो। Tejas is asking another question. Sorry, just give me a moment. We'll begin with the next part as soon as this comment is done. तो आपने क्वेश्चन भेजा था @ ओके। सो आई थिंक तेजस इज आस्किंग, अगर आपके पास एक वर्ड है ऐसा, सो व्हाइल टोकनाइजेशन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टोकन। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ना ये स्टॉप वर्ड है ना आप इसको निकालोगे, सो दिस विल एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर वर्ड। प्रणव रखेजा इज आस्किंग, okay, if I say boy and if I say boys, yes, over here S is a stop word. Hello Adi, long time no see. Okay, so let's move on to the next part. Right, हम लोगों ने just example देखा था what is the difference between stemming and lemmatization. Please remember to practice this question a lot of times. I am guessing that this question will be asked in your exam. Okay, so after this हम लोगों के सब क्लीनिंग हो चुका है, जितना भी हमारे पास डेटा था, डेटा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मेन वर्ड्स निकाल दिए। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम लोगों को अब ये सब टोकन्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। टॉप वर्ड्स आर बेसिकली जस्ट लाइक फिलर वर्ड्स, एग्जैक्टली तनमय, जस्ट लाइक यू आर वाचिंग आईपीएल में बीच में ऐड आता है फॉर फिलिंग। Tokens can be considered same as that. Okay, so now this is another important concept which I have already mentioned over here. ठीक है, ये another important concept है। क्या होता है, आपके पास जितने भी words निकले हैं आप उसको एक बैग में डालते हो, shuffle करते हो एक बार, then what you do which tells you the frequency of each word। जैसे it maximum times आ रहा है, फिर उसके बाद I think I आएगा 5 times,
the 4 times, 2, 3 times. So this process creates a bag of words which has frequency associated with it. I think you have already studied this. Tritogo is asking, sir, please explain again. Tritogo, please let me know what topic you're having difficulty in. Sir, will you do green skills also? So, इनका green skills का आपको actually जरूरत नहीं है. You can just go through the chapter. Just give it like 15 minutes. आपका green skill का revision complete हो जाएगा. Use of bag of words. Okay, Pranav. Bag of words is used in NLP. NLP is not a specific word. It's an entire process. So जो NLP का process आता है उसमें आपका जो almost at the end part आता है bag of words. It is used to convert words into numbers. Why are we converting into numbers? जैसे it का जो value है वो आया 6, I का value आया 5, dot का value आया 4. Why are we converting this into numbers? Is because computer को numbers के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता. Okay? So let's go ahead. Now this is an important graph. As we were seeing, stop words को हम लोग निकालते क्यों है ज़्यादा? Stop words को हम लोग अपने वर्किंग में क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? Because उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. For example, if I have a novel and novel has about 10 raised to 8 words, I think there are a lot. But उसमें से अगर आप देखोगे 10 raised to 4 words ऐसे होंगे. For example, the, and, a, and. So these words don't give any meaning. So if you look at this graph, अगर occurrence ज़्यादा होता है, that means the value is very less. Just like these words. So what you can do is you can remove these words. These words are not important. Then after that, if you look at words like these words provide you meaning. So आप बोल सकते हो ये वर्ड ज्यादा frequently यूज नहीं होते, but they come somewhere in this part of the graph. They have some value. ठीक है? And the most rare and valuable words, for example, if I say Venus or if I say Ronaldo, so these words are not used a lot, but they have a lot of value because इनका occurrence बहुत कम है. All right. So from your board point of view, you just have to remember this graph. हो सकता है कि आए, हो सकता है आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाए. All right, so let's move on to the most important part of bag of words. Kashi Kashyap is asking, sir, live record नहीं हो रहा क्या? I do not know about that. So just please put a thumbs up till now if this session was helpful to you. If you had any doubts, you can go ahead and ask in the chat box. So now, document frequency का मतलब क्या होता है? We will look at that. So, if you remember the term TF, IDF, it is composed of 2 words. एक होता है term frequency और एक होता है document frequency. Now, please let me know in the chat if you're able to understand this completely. या फिर if you have doubts, I will be able to make you understand in a better manner. Now let's say if I have a word like okay, taking an example, I have 4 documents, ठीक है, and इसमें बहुत सारे आपको words दिए गए हैं, and one of the words is let's say football. Now ये जो football word है आपके 4 डॉक्यूमेंट में से सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है. There are only 2 documents which has this word known as football. तो आप इस चीज के बारे में क्या बोलोगे? इसका जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2. तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जस्ट काउंट्स कि आपका जो वर्ड है कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है. जस्ट टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ टेलीग्राम फॉर द लाइव स्ट्रीम. ऑलराइट, आई कैन डू दैट, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एंड जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं दे माइट गेट रिप्लेस्ड, सो आई एम जस्ट डिलेइंग इट. एनीवेज, so this is the meaning of document frequency. And inverse document frequency का मतलब क्या होता है? Let's say फुटबॉल का डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या था? 2. हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या देखा? The document frequency was 2. And what is the total documents?
All right, that was Telegram. I hope they sir thumbs up. I am sitting upside down. Okay, so the total number of documents जो हम लोगों ने देखे थे that was 4. तो जो आपका inverse document frequency होगा that is document frequency. Just a quick check if you are able to hear my voice properly. So this is known as inverse document frequency. All right, just please put a thumbs up if you're able to understand the inverse document frequency. We will solve a question on this, but अगर आपको याद नहीं रहता है, just remember this formula: total number of documents upon कितने documents में आपका जो word है वो आ रहा है. Okay. If you remember term frequency क्या था? Term frequency was the total number of occurrences of a word. राइट, हम लोगों ने ये निकाला था एंड ये होता है टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस एंड दिस इज द फॉर्मूला. नाउ आई डू नॉट नो इफ एन एग्जाम दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट लॉग, क्योंकि लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत है. एट दैट पॉइंट आई थिंक यू कैन जस्ट डायरेक्टली यूज दिस पार्ट. What are the most expected questions for tomorrow's exam? Arush is asking. In the last 5 minutes of the session, I will tell you the most important questions जो definitely आने वाले हैं. Sir, if we are asked to make vector table, do we have to make all the tables? Incarnate, I think you can make all the tables. That will be more beneficial. अगर आपको directly table भी बनाना है, वो भी directly बना सकते हैं. Okay, so with this, NLP के most important topics are over. Let's move ahead to evaluation now. So how do you understand what a true positive is? One is definitely about TF idea. So confusion matrix में आपको ये सब words अगर याद होंगे, true positive, true negative, false positive and false negative. ठीक है. So हम लोग ये कैसे चेक करते हैं कि कोई चीज ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू नेगेटिव है? आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्टकट. राइट, आई थिंक यू हैव कवर्ड ऑल दिस बिफोर, बट आई विल जस्ट क्विकली गिव यू अ शॉर्टकट. ठीक है. So when you look at the second part, this means आपने predict क्या किया है, and the first part means the reality, right? So if I am telling you if something is true, negative, right? So this means this is the reality, this is the prediction, and this is the TF-IDF के प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो GW, आई विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन जहां पर हम लोग सब प्रोसेस देखेंगे TF-IDF का. I find this very difficult. Prediction and reality. Okay, let me try to explain this again. The first part which says false. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं रियलिटी. राइट, अगर आपके सामने आ रहा है समथिंग लाइक ट्रू पॉजिटिव, this means your reality is true and your prediction is also true, right? So ये अगर दोनों मैच करते हैं, that means your reality is matching with the prediction. I know this gets kind of confusing at first, but हमारा जो एग्जाम है वो कल है. I will just quickly give you a shortcut again how to remember this. Hello Suchi. False positive is when the prediction is correct but the reality is incorrect. Exactly. So right, अगर आप देखोगे जो second part आता है that is your prediction and the first part जो आता है वो आपका होता है reality. Just a quick way to remember this. Now let's move on to the more important topic, that is the confusion matrix. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग के जो रिजल्ट्स आते हैं it makes us easy to understand. Now it is not an evaluation metric. When I talk about evaluation metric, can you name a few of the metrics? Anyone in the chat? Yes, तन्मय, you're exactly right. अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें आपको एक क्रॉस का मेथड होता है. You are able to see all that.
All right, just a quick check if you're able to see my screen. Please put a thumbs up if you're able to see the screen. Okay. All right, great. Yes, precision, recall, accuracy, these are all the metrics. अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई नहीं की है इसके बारे में, यू जस्ट हैव टू लुक एट द डेफिनेशंस. डेफिनेशन में भी आपको इन सब चीजों का सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है. ओके, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so let's move on to the next part quickly. This is how a confusion matrix looks like. जब आपका prediction match करता है, it is true positive. जब आपका prediction हो yes, but आपका reality के साथ match नहीं कर रहा है, आपने predict किया है positive, but reality is false. So this is the table which you have to remember. Just by heart it. F1 score is also a good matrix, a good metric to understand how your model is performing. Too many notifications for Telegram. Okay, so let's see the importance of metrics. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि आप कैसे जज करोगे कि आपको कौन सा मेट्रिक यूज करना चाहिए. आई विल नॉट delve deep into it, but I will just give you a simple example. So let's say there is a forest fire and आपके पास एक मॉडल है. Let's say I call the model as probably alpha model. ठीक है, ये आपका एक AI मॉडल है. It predicted that there is a forest fire, but in reality there was no forest fire. ठीक है, आपने प्रेडिक्ट किया हाँ है, बट एक्चुअली में नहीं है. So that is it is fine. It does not matter much. आपके सिर्फ फायर फाइटर्स को जाना पड़ेगा वहां पर, फॉरेस्ट फायर इज नॉट देयर. बट लेट्स लुक एट अ केस जहां पर आपका जो मॉडल है उसने प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव, बट एक्चुअली में फॉरेस्ट फायर है. तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है. हो सकता है कि आपको जो फॉरेस्ट फायर है बहुत जगह फैल जाए. इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. सो आपका जो फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट है इट इज वेरी हाई. इट बेसिकली मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो फॉल्स नेगेटिव मेट्रिक है इट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. So are you able to see the screen properly? Is my voice audible? All right, so let's see the next one. Okay, Tanisha, great to see you for the IT 402 sessions. I hope to see you there. Anyways, अगेन फॉल्स नेगेटिव क्या हो सकता है. आपने प्रेडिक्ट किया कि किसी को कोविड है बट एक्चुअली में नहीं है, सो दैट इट इज वेरीफाइड. बट इफ यू हैव प्रेडिक्टेड दैट समवन डज नॉट हैव कोविड बट ही और शी एक्चुअली हैज कोविड, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि आपका जो कोविड इंफेक्शन है बहुत स्प्रेड हो सकता है. दिस इज अनदर एग्जांपल कि आपका जो फॉल्स नेगेटिव है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Suchi Kumari is asking, आप anime fan हो? So yes, Suchi, I do watch animes. Currently, I'm watching Naruto. Okay. So another example can be high false positive cost. तो हम लोगों ने देखा कि आपने कोई चीज को नेगेटिव किया है बट उसका कॉस्ट बहुत है. एक जगह पे हो सकता है कि आपने प्रेडिक्ट किया कि देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड इन प्रोबेबली रांची. रांची एक जगह पे आपने प्रेडिक्ट किया कि देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड, राइट. आपका प्रेडिक्शन पॉजिटिव. सो वहां पर सब गवर्नमेंट एजेंसीज पहुंच गए, आपने सब मशीन्स ले आए, but it came out to be false. Now this cost is quite high because आप ऑलरेडी मशीन्स लेकर आ चुके हैं, आपको बहुत सारे पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं उस चीज में. तो दिस मीन्स आपका जो फॉल्स पॉजिटिव है इट कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू. कैंसर का एग्जाम्पल ज्यादा खतरनाक होगा बट आई थिंक कोविड एग्जाम्पल वॉज मोर अप टू द मार्क. Anyways, let's move on ahead. We'll be ending the session in the next 5 to 10 minutes because most of the important topics are already done. फॉल्स पॉजिटिव में आप एक और एग्जांपल ले सकते हो स्पैम का. फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आपने एक एडमिशन लिया एंड दे सेंड यू अ मेल दैट यू आर एक्सेप्टेड बट योर जीमेल व्हाट इट डिड इज आपके जो मेल को उसने स्पैम मार्क कर दिया. नाउ इट इज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन. सो व्हिच मींस आपका जो फॉल्स पॉजिटिव, व्हिच मींस आपका जो स्पैम है दैट इज पॉजिटिव बट इट इज एक्चुअली फॉल्स. इसका कॉस्ट बहुत हाई है. Okay, so these are the important metrics. Okay, so combination of precision and recall gives you the F1 score. I know you have already practiced all this. So let's quickly move on to the practice problems. Okay, so let's quickly find out the accuracy
precision and recall. As I told you, I will give you a shortcut to this. You don't have to remember the formulas. Now what you need to do is, सबसे पहले accuracy तो बहुत easy होता है. I think you have to sum all these things. There are a lot of notifications today, sorry for that. Total upon this, right? तो हमारा आंसर आएगा 22 by I think 140, 22 upon 169, not 69. I think it should be total 199, right? तो प्रेडिक्शन जो हमारा प्रेसिजन है उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ दिस इज द ट्रिक. द ट्रिक इज this value upon the sum of this value, so which means 22 upon 22 plus 12. Understood? आपको इस रो में कैलकुलेट करना है. सिमिलरली इफ यू आर कैलकुलेटिंग रिकॉल, रिकॉल में क्या आएगा? रिकॉल में आपका आएगा 22 upon 22 plus 47. So this is how easily you can directly calculate precision and recall. So Tanmay has given the formula directly. बट अगर आपके पास ये एक फिगर है, आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस. सो लेट्स नाउ क्विकली फाइंड द प्रेसिजन एंड रिकॉल फॉर दिस. प्रेसिजन होगा आपका 0 अपॉन 0 प्लस 3. आपका जो रिकॉल आएगा दैट इज समथिंग लाइक दिस, 0 अपॉन 0 प्लस 3. तो आपका प्रेसिजन और रिकॉल दोनों ही बहुत खराब है. सो दैट मींस दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग एट ऑल. You did not take 1118 for accuracy in the numerator. Sumit Kohli, sorry for the calculation error, but I hope you understood what I was trying to convey. Dhavi is asking, sir, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे. All right. So now let me get back to this. So the usefulness of this trick is you do not have to remember the formula. जैसे आपको ट्रिक पता है, आप ऑलरेडी अपना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. So for example, this is ट्रू पॉजिटिव, राइट? अगर आप चेक कर रहे हो प्रेसिजन के लिए तो आप यहां पर लिखोगे फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. दिस इज हाउ इजीली यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला. आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक. But this trick is generally to get the right answer. Alright, so let's move on and see what the answer to this is. Precision and recall. I am not calculating the F1 score, but can anyone tell me what is the formula of F1 score? Precision will be 50. This upon 50 plus 20, which is 70. Similarly, recall will be what? 50 upon 50 plus 10, that is 60. So Kshitij has given a very good trick now, right? So this is how you can directly solve accuracy, precision and recall. And what I am assuming 2 से 3 marks का आपको question आ सकता है. You just have to use the formulas if you are comfortable with that, or you can directly use this trick. Okay? If recall and precision comes 0, that means your model is not performing well. It is as good as a 0 model. Okay, so let's move ahead and look at the next question. Okay, so as I said, this is very important. That's why this slide has been repeated multiple times. Stemming versus lemmatization. Stemming is actually fast and this is slow, but this gives you a meaningful word and this does not. Okay? All right. So this is a vector table. Okay. So vector table क्या होता है actually? This is your document 1, this is your document 2, and this is your document 3. So आप देख रहे हो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं. आपने क्या किया? आपने सब वर्ड्स का एक सेट बनाया, which is this. आपके 3 डॉक्यूमेंट्स में जितने भी वर्ड्स हैं आपने एक सब उसका एक रो बनाया. ऑलराइट, जैसे रिया एंड रॉय और व्हाटएवर वर्ड्स इट हैज. सो नाउ यू चेक फॉर द
first document. The first document has Ria and Roy are angry. So ये चार word already इस document में है. That is the reason they are marked as 1. But अगर आप देखोगे went to and बाकी जो words हैं वो उस document में present नहीं है. That is why they are marked as 0. Similarly, if you look at document 2, आप देखोगे इस document में रिया जो word है वो available है. The next word is went to a doctor. So you can directly say Riya went to a doctor was the second document. Similarly, if you follow this procedure, आपको एक पूरा वेक्टर टेबल मिलेगा जिसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. This is a fairly easy question. You will be given 3 or 4 sentences. आपको सारी यूनिक वर्ड्स निकाल के उनका एक रो बनाना है. Alright. Also, please remember आपकी जो भी प्रेसिजन रिकॉल और F1 स्कोर जो आएंगे दे विल बी बिटवीन 0 to 1. 1 is perfect, 0 means it is useless. Good models have F1 score which is greater than 0.9. ठीक है. Right, so Tanvir's comment is very useful for you guys. Now, please take a screenshot of this. I think this might be asked in your tomorrow's exam. These are the 2 type of chatbots which can be asked. The difference between them. Okay, so now this is the most important question from your entire question paper, I think. These are the documents which are given to you. हम लोग ये सारे documents को क्या बोलते हैं? Corpus. So what was our first step? We have to find out all the unique words in our corpus. Right? So this is the formula which you have to remember. I do not know if in your exam you will be asked to calculate log, but for that, the 2 things which you have to remember is term frequency as well as the inverse document frequency. जैसे ही आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, you have to remember, you have to find out the term frequency as well as the inverse document frequency. ठीक है? So this is the first vector table. I just told you how you can make that possible. Right? आपके जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, आप सब इस रो में लिख देते हो. यस, आप पीएफ आईडीएफ का जो आंसर है वो फ्रैक्शन में लिख सकते हो. बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम. शशि कश्यप, आई थिंक आई ऑलरेडी कन्वर्टेड इट. यस, दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज द बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम, क्योंकि अगर आप इसके एंड में इनका सम करोगे तो आपको वी की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आपको आर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, गोइंग की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एंड सो ऑन. सो बेसिकली दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स. राइट? सो नाउ व्हाट this is the inverse document frequency. ठीक है, आपको टर्म फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इन सब का एडिशन करके. दिस इज टू यहाँ पर आपको टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो एंड यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये कैसे आता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम लोग ने वी वर्ड कंसिडर किया है. वी आ रहा है 2 जगह पे. ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया 2, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर 4 इन नंबर. दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूमरेटर एवरीवेयर. जहां पर भी आप देखोगे न्यूमरेटर में आपका 4 आ रहा है बिकॉज दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. नाउ लुकिंग एट आर इज आल्सो कमिंग 2 टाइम्स आई थिंक. तो आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख दोगे 2. सो दिस इज हाउ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. Can you share some sample papers? Shruti, I will definitely try to share it in the Telegram group. All right. So with this, we have actually completed all the important topics for today. If you have any more doubts, you can go ahead and ask me. I'll be happy to help you. Everything is there already. So जो भी आप Telegram group का आपको link दिख रहा है in the chat, you will find everything there. You just have to search for it. If you're not able to find it, just ask in the group. People will be able to help you out. नहीं तो मैं आपके साथ वो document share कर दूंगा. Hard to learn the definition of NLP and evaluation. Arman Singla, I have shared a few documents जहाँ पर हम लोगों ने
subjective questions discuss किए हैं. I have shared the document in the group. I think you should refer to that. बहुत ही easily आप इनके definitions understand कर सकते हो. I think there are about 3 definitions of NLP and evaluation. Don't get confused. Just remember one definition. That is more than enough. It's great hearing that, Shashi. You can turn off Telegram from the system tray of Windows. Yes, Pranav, I know that. But for that to happen, I have to close the presentation, right? Can you please share the Telegram link? Shruti Gaikwad, I have already pinned the link in the chat. Okay, so I think I'll have to end the session quickly. Can you please explain step back of words again? अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास 100 वर्ड्स हैं, आप क्या करते हो? सारे यूनिक वर्ड्स निकालते हो, यूनिक वर्ड्स को एक आप कॉलम में लिखते हो एंड सारे यूनिक वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी जो है इस कॉलम में लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आई वर्ड है वो 5 बार आ रहा है, अगर आपके पास एम वर्ड है वो 4 बार आ रहा है. दिस इज नोन एज अ बैग ऑफ वर्ड्स. I think so. You might not be able to find other people who are teaching AI, but I'm glad that my session was of help. Yes, not in the description. CS one day I'll be able to share it in the Telegram group. All right. So this brings us to the end of the session. I know we all have prepared a lot from the past 2 sessions, previous 2 semesters, and I know you have all prepared really well. Please do not get confused in the examination. क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है. देयर माइट बी अ फ्यू क्वेश्चंस जो रिफ्रेज होंगे, हो सकता है आपको थोड़ा टफ दिखाने के लिए वो क्वेश्चंस आए, बट AI 417 एज अ सब्जेक्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई गिव यू द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई गिव यू द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई थिंक आपने बाकी का प्रिपरेशन किया ही होगा. यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क. गुड लक, and I think with this I'll be ending the session. So please do not forget to subscribe to this channel, because I'll be not only sharing some study materials, but we'll be having more interesting videos as well. All right, so this is it from my side. It was great having you after a couple of months. I'll be seeing you in the next session. Till then, see you. Bye bye.